Hi everyone. Sorry, there was a small technical glitch from our side, so that is why we are late for 5 minutes. But now it's all set. So first of all, before we go forward, just let me know if I'm audible to you all. अगर आप लोग को मेरी आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में या क्वेश्चन बॉक्स में कंफर्म कर दो कि एवरीथिंग इज फाइन. ओमकार, आपके तरफ से आप म्यूट कर दीजिए. All right, so I think I'm audible, and we will start with today's topic. So you must have heard about the stop loss orders a lot of times, but there are a lot of people who don't know how to use it. आप लोग ने स्टॉप लॉस के बारे में, स्पेशली अगर आप F&O में ट्रेड करते हो, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, तो आपने स्टॉप लॉस के बारे में बहुत बार सुना होगा. बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते कैसे हैं, या फिर even if you know about the stop loss orders, if you are already using the stop loss orders while you are into a position, but there is a possibility that you do not know the whole potential of this stop loss orders. Okay, तो हम लोग आज के वेबिनार में स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के बारे में इन आउट सब डिस्कस करेंगे. आपको उसके जो भी बेनिफिट्स है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ लगाना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. So we will go forward, and without any delay, now we will start the webinar. Before going forward, I'll just read the standard disclaimer for you all. The content and explanation shared in this webinar are only for the information and educational purpose. Stock market trading investments are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making financial decisions. All right, let's go and start with the topic itself. So what is a stop loss? इसको इजी भाषा में क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है? सो पहले इसके पहले ना आई हैव गॉट अ फीडबैक दैट आई शुड कीप इट मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, तो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट दोनों लैंग्वेज के ऑडियंस को इजी पड़ेगा. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टॉप लॉस होता क्या है. कोई भी पोजीशन में आप हो, कोई भी स्टॉक आप होल्ड करे हो, कोई F&O का आपके पास पोजीशन है, तो उसमें आप 100% श्योर नहीं रह सकते हो कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा. करेक्ट, बिकॉज स्टॉक मार्केट है, यू कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट एनीथिंग इन इट. करेक्ट, तो आपको कोई एक लेवल डिसाइड करना होगा कि ये मेरा मैक्सिमम रिस्क है, इससे ज्यादा लॉस आई कैन नॉट अफोर्ड. ओके, तो वो एक जो लेवल आपके पास निकल के आता है वो आपका स्टॉप लॉस है. वो स्टॉप लॉस हम सिस्टम में फिट कर सकते हैं, तो जब भी वो स्टॉक या फिर वो पोजीशन उसके नीचे जाने लगेगा, उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, तब वो सिस्टम खुद अपने आप आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा और आपको मैन्युअली इंटरवेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, you will not have to intervene manually. If you have set the stop loss into the system, it will cut the trade automatically. Okay, so stop loss is an order placed with a broker to square off a specific stock or position once it reaches a certain price. A stop loss is designed to limit an investor's or trader's loss on a secured position. ठीक है, ये लॉस को लिमिट करने के लिए ये ऑर्डर होता है. ठीक है, कि लॉस और ना बढ़े, अनलिमिटेड लॉस ना हो, इसके लिए एक स्टॉप लॉस ऑर्डर का प्रोविजन होता है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, stop loss in a buy trade is always going to be on a lower side than the LTP, which is last traded price. ठीक है, तो ये क्यों होने वाला है, मैं लॉजिक बताती हूँ. सेल में क्या होता है, जब भी आपका कोई सेल पोजीशन है उसमें आपके LTP के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा. ठीक है, ये क्यों होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट इन अ बाय ट्रेड वेन एवर द प्राइस इज गोइंग टू गो अप. ओके, सो योर स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी लोअर देन लास्ट ट्रेडेड प्राइस. Similarly, you are going to make profits in a sell trade whenever the price is going to go down. Correct, that is why your stop loss is going to be higher than the last traded price. Okay, that is the logic behind this. Let's go forward and take an example over here. So यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है मैंने. एक बाय ट्रेड है, इसमें आई हैव टेकन निफ्टी 22,000 कॉल.
my entry is at 100 and my stop loss is at 70. Okay, so whenever the price is going to go down and if it touches 70, the position will be squared off. Okay, that is my stop loss order. Similarly sell trade में क्या हो रहा है कि निफ्टी का मैंने 22,000 का कॉल 100 पे सेल किया हुआ है, ठीक है, ये मेरा आई हैव सोल्ड दिस ऑप्शन, ये मेरा शॉर्ट पोजीशन है और मेरा स्टॉप लॉस है 130 पे. सो इफ द प्राइस गोज अबव एंड टचेस 130, द पोजीशन इज गोइंग टू बी स्क्वायर्ड ऑफ. ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्टॉप लॉस कम्स आउट. नाउ अगर ये स्टॉप लॉस नहीं होता तो क्या हो सकता था? अब 100 के पोजीशन में योर कॉस्ट, हम लोग अभी लॉट साइज के बारे में नहीं बात करेंगे. निफ्टी का लॉट साइज है 50, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट 100 into 50 हुआ, करेक्ट. बट अभी हम लोग जेनरिक 100 के बारे में बात करेंगे, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल. सो इसमें लेट्स से आपने 100 पे एंट्री किया है. इफ यू हैव नॉट प्लेस्ड एनी स्टॉप लॉस, ओके, सो दिस 100 हैज फुल पोटेंशियल टू गो डाउन टू 0. ओके, ये स्पेशली ऑप्शंस में आपके ऑप्शंस बिल्कुल मतलब वर्थलेस हो सकता है एक्सपायरी तक, अगर ट्रेंड बिल्कुल चेंज हुआ या अपोजिट तरफ का मोमेंटम आ गया. ओके, तो ये 100 आपका 0 हो सकता है. तो जहां पे आपका लॉस 30 पॉइंट पे लिमिट हो सकता था, तो वो आपका 100 पॉइंट्स तक जा सकता है. ओके, सेल ट्रेड में क्या हो सकता है? सेल ट्रेड में आपने 100 पे सेल किया हुआ है, यू हैव सोल्ड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन एट 100, correct. You will only make profit when it goes down, right? 90, 80, 70, 60, 10, right? That is going to be your profit. But if it goes above 100, it will start showing you the loss, right? If you do not cut this position at 130 or any certain stop loss level, what will happen? This 100 can become even 1000, correct? कुछ भी हो सकता है. मार्केट में कल को कुछ बहुत अच्छी न्यूज आ गई तो 4-5% का मूव आ गया, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो दिस 100 कैन बिकम 1000, इट कैन बिकम 500, राइट? तो एक्चुअली जो आपका सेल ट्रेड है इसमें आपका लॉस अनलिमिटेड भी हो सकता है. सो विच इज व्हाई योर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, बी इट बाय ट्रेड और सेल ट्रेड, स्टॉप लॉस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, let's go forward. And now let's talk a little bit about risk reward ratio, because now we know about the stop loss. Okay, we know about the targets. Okay, so let's just discuss what is risk reward ratio. So you know, हम लोग risk reward ratio के बारे में बहुत बार डिस्कस करते हैं. इसके पहले भी जितने मैंने वेबिनार्स लिए हैं उसमें मैंने बहुत बार मेंशन किया है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में या फिर आरआर के बारे में, राइट? आई मोस्टली यूज द वर्ड आरआर, रिस्क रिवॉर्ड. सो उसके बारे में जब पता होता है तो बिफोर गोइंग इनटू अ ट्रेड वी थिंक अबाउट द आरआर फर्स्ट. ओके, so what is a risk reward ratio? The risk reward ratio indicates the prospective reward a trader can earn for every rupee the risk on a trade. ठीक है, हर 1 रुपए का जो आप रिस्क ले रहे हो उतने रिस्क से आप कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बताता है. ओके, a lower risk return ratio is often preferable as it signals less risk for an equivalent potential gain. All right, so इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी का जो हमने 22,000 का कॉल लिया था उसका एंट्री हमने 100 पे की और स्टॉप लॉस लगाया 70 पे, टारगेट एट 160. तो अभी मेरा रिस्क कितना हुआ? 30 पॉइंट्स का, करेक्ट. और रिवॉर्ड कितने का मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ? 60 रुपीज का. तो इसमें मेरा आरआर क्या हुआ, रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ? 1:2, राइट. मैं 1 रुपए का रिस्क जो ले रही हूँ उतने में मैं 2 रुपए का गेन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तभी मेरा ये 30 पॉइंट्स का रिस्क है और 60 पॉइंट का रिवॉर्ड है. सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्क रिवॉर्ड ओवर हियर इज दैट whenever we trade especially into F&O, we tend to take multiple trades, right, in a day. So अगर मेरी accuracy over the time जितना भी मैं ट्रेड करती हूँ तो over the time you know at the end of the week, at the end of the month, I can just list down my trades. or if you you know have your own trading journal, तो आपको आपकी एक approximate accuracy पता होती है कि आपके 10 में से कितने ट्रेड्स accurate रहते हैं या 10 में से कितने ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और कितने ट्रेड्स में आपका टारगेट हिट हो रहा है, राइट? दैट इज योर एक्यूरेसी. तो अगर आपका एक्यूरेसी 50% ही है, ठीक है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ज्यादा ही रखना पड़ेगा. ठीक है, तो दो चीजें आपको पता रखनी पड़ेगी. एक तो आपका अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेसी कितनी है और
अप्रोक्सीमेटली आप व्हाट रिस्क रिवॉर्ड यू आर एक्सपेक्टिंग इन एवरी ट्रेड, ठीक है। अगर आपका 50% का एक्यूरेसी है एंड इन एवरी ट्रेड इफ आई एम जस्ट टेकिंग 1:1 RR, व्हाट विल हैपन, मेरे 5 ट्रेड रॉन्ग होंगे, 5 ट्रेड राइट होंगे, तो 5 ट्रेड में जितना मैंने गवाया उतना ही मुझे 5 ट्रेड में मिलेगा, तो इसमें मेरा एक्चुअली ब्रोकरेज एक्स्ट्रा जाएगा और नेट टू नेट मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी यू नीड टू डिसाइड योर रिस्क रिवॉर्ड एज वेल। सो 1:2 इज अ सेफ रिस्क रिवॉर्ड। तो इसमें क्या रहता है कि अगर आपका एक्यूरेसी 50% भी है या 60% भी है तो भी आप नेट टू नेट प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। सो दिस इज द importance of knowing the risk reward ratio and knowing your own accuracy as well. Let's go forward. And now we will talk about the types of stop loss orders. तो अलग अलग टाइप के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं, बट उसमें भी एक स्टॉप लॉस लिमिट होता है, एक स्टॉप लॉस मार्केट होता है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। सो वी विल गो इन डीप इन ऑल दीज थ्री। ओके, फर्स्ट स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर. So a stop loss market order is an order in which a buy or sell order is placed at the market price once the stop loss level is triggered. तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी आप ट्रिगर प्राइस डाल रहे हो स्टॉप लॉस का, तो जैसे ही वो प्राइस ट्रिगर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट अवेलेबल जो भी आपका बिड होगा उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, स्टॉप लॉस में दो टाइप के प्राइजेस होते हैं, एक तो ट्रिगर प्राइस और एक स्टॉप लॉस का एक्चुअल प्राइस। ओके, ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ट्रिगर प्राइस पे वो जो आपका ऑर्डर है वो ट्रिगर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ट्रिगर मैंने एंट्री करी है 100 पे, ओके, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 70, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि 71 मेरा ट्रिगर हो जाएगा या फिर 70 मेरा ट्रिगर हो जाएगा और 69 मेरा स्टॉप लॉस का प्राइस हो जाएगा, तो मेरा ये रेंज हुआ, ठीक है। तो 70 पे जैसे ही मार्केट ट्रिगर होगा या फिर वो ऑर्डर ट्रिगर होगा, उसके बाद 70 से लेकर 69 के बीच में जो भी अवेलेबल अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई होप यू नो व्हाट इज अ ट्रिगर प्राइस एंड व्हाट इज एक्चुअल स्टॉप लॉस प्राइस। ओके, सो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, यू ओनली पुट इन द ट्रिगर प्राइस, और एक्चुअली उसमें रेंज नहीं होता है, वो ट्रिगर प्राइस के नीचे या फिर वो ट्रिगर प्राइस के ऊपर, अगर बाय का आपका ट्रेड है तो नीचे होगा, और अगर सेल का आपका ट्रेड है तो ट्रिगर प्राइस के ऊपर, ये लॉजिक है। तो वो आपका मार्केट में जो भी नेक्स्ट अवेलेबल बिड है उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड रेंज नहीं मिलेगा। ओके, दिस इज अ बिट रिस्कियर, यू विल नॉट नो कि कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो सकता है। जहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, in such kind of markets it is a bit risky to have stop loss market orders. So 2021 से ऑप्शंस में स्पेशली स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग पहले से मार्केट फॉलो कर रहे हैं तो फ्री ट्रेड्स का बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ गया था। राइट, फ्री ट्रेड में क्या हो रहा है कि एक 100-200 पॉइंट का अचानक से एक कैंडल बन जाता था, एंड इट वाज नॉट एक्चुअली लॉजिकल, वो एक एग्जीक्यूशन एरर होता था बिकॉज ऑफ द मार्केट ऑर्डर्स। ओके, सो ऑप्शंस में अपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है। We can have them in the equity, we can have them in futures, but not in the options. All right, next is stop loss limit order. Stop loss limit order is a fixed loss stop loss in which a stop loss order is triggered after a certain price before it is executed at a decided price. तो ये certain price क्या हुआ, ट्रिगर प्राइस हो गया। जो भी आपका ट्रिगर प्राइस है वहां पे आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, और जो भी आपने स्टॉप लॉस प्राइस डाला है वहां तक वो जो बीच का बैंड है प्राइस का, वहां उसमें कहीं पे भी वो एग्जीक्यूट हो सकता है, जहां पे भी अवेलेबल रहेगा अपोजिट साइड का ऑर्डर वहां पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप कोई पोजीशन में हो और ट्रेलिंग में आप एक सर्टेन परसेंटेज डाल सकते हैं या फिर वेरिएशन डाल सकते हैं, और उसके हिसाब से वो जैसे ही आपका एलटीपी ऊपर या नीचे जाता रहेगा, तो मान लो आपने 5 रुपीज का डिफरेंस डाला हुआ है, तो जितना आपका एलटीपी ऊपर जाता रहेगा उतना ही 5 रुपीज के डिफरेंस से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा। ओके, सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। And now, what we understood till now,
what is stop loss, the types of stop loss orders, right? The risk reward, and now first we will understand the basic logic of defining the stop loss level. Okay, क्योंकि we have taken a lot of webinars on price action, on chart patterns, on indicators, on open interest data, right? And in all the webinars I have given certain logics based on those topics कि कहाँ पे stop loss का level आएगा, कहाँ पे target आएगा, कहाँ पे entry हो सकती है. But generic way में, for example, if someone is attending this particular webinar for the first time, तो फिर एक जेनरिक आइडिया देने के लिए आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओवर हियर कि हाउ डू वी डिफाइन द स्टॉप लॉस लेवल इन द रेंज बाउंड मार्केट एंड इन द ट्रेंडिंग मार्केट. ओके, सो दिस इज दिस निफ्टीज चार्ट. ओके, एंड इफ यू कैन सी ये पूरा रेंज बाउंड यहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है, तो इसमें हमारे रेंज बाउंड ट्रेड्स निकल के आए होंगे, करेक्ट? ये हमारा 200 पॉइंट्स का एक बैंड है. ये तो स्पॉट का चार्ट है, आई हैव ओनली टेकन दिस एज एन एग्जांपल, बट this kind of charts you will find out whenever you try to trade in the actual market. Okay, so range bound market में what we can do actually कि 1:2 RR को, अगर 1:2 RR आपका बैठ रहा है तो उस हिसाब से you can finalize your trades. ठीक है, अब ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो ऊपर की तरफ, जो नीचे की तरफ आप सपोर्ट देख रहे हो, तो सपोर्ट के पास से ये रिवर्स होके ऊपर जाना है. रेजिस्टेंस के पास से इट इज गोइंग टू टेक अ रिवर्सल टू द डाउन साइड. नाउ दिस पैटर्न यू नो अबाउट इट, राइट? So this is why on the upside you are going to take a short trade, on the downside you are going to take a long trade. So this is how we take a contra trade in the range bound market. Okay, but we have to just make sure that 1:2 RR is fitting into it. Okay, this is a safe RR. Of course people try to choose different kinds of risk reward for as per their convenience, but this is a safe risk to reward. So I'll just give an example about this particular price action. There are absolutely various other opportunities in this particular band, but I'll just give you an example of this. So I'm taking an short entry, which is my contra trade on the upside. Okay, and the level is 15,860. Okay, my stop loss is at 15,930. तो स्टॉप लॉस मैं कैसे डिफाइन कर रही हूँ, जो ये मेरा रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर मेरे को एक सर्टेन लेवल पे स्टॉप लॉस डिफाइन करना है. तो टारगेट मेरा कितना निकल के आ रहा है, कहाँ तक आई कैन एक्सपेक्ट द डाउन साइड. ठीक है, अब ये मेरा 200 पॉइंट्स का बैंड है. अब आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट 200 पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन. जब एक्चुअली ये चार्ट बन रहा होता है, एक्चुअली ये जब आगे का मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, so it is difficult to be sure that this particular price action will give me 200 points, correct? So on a safer side, I'm going to think that it will give me 150 points. ठीक है, 50 points I have left. ठीक है, so उस हिसाब से what stop loss I can afford over here. Okay, based on that I have taken out 70 point stop loss above this particular resistance. All right, so this is my 1:2 risk reward. This is my safe risk reward. I am taking the risk of 70 points, and I'm expecting a gain of 140 points, which is coming at 15,720. Okay, now if you can see, this particular price action gave me even more than 200 points. It actually went to 680 somewhere. Okay, so this is how we decide the stop loss level in the range bound market. Now what happens in the breakout here, because it is a breakout, I'm giving you an example of a breakout trade, but you can apply the same logic in the breakdown trade as well. Okay, now you have to actually look at the breakout candle, okay, and the confirmation candle. So this is coming out as my breakout candle, this is my confirmation candle. So I'm going to take entry at the end of the confirmation candle. Okay, जहां पे भी मेरा कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हो रहा है वो मेरा एंट्री होगा. राइट नाउ आई एम नॉट रियली फोकसिंग अपॉन द एंट्री, आई एम फोकसिंग अपॉन द स्टॉप लॉस ऑर्डर ओवर हियर. ओके, सो वेयर एम आई गोइंग टू फाइंड आउट माय स्टॉप लॉस? द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल. ओके, दिस इज द लो पॉइंट.
इफ यू कैन सी दिस इज द लो पॉइंट, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं, तो जो ब्रेकआउट कैंडल है वो ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल, तो कंफर्मेशन कैंडल के हाई का क्लोज का आपका एंट्री रहेगा, और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। सिमिलरली जो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन मोमेंटम में whenever you try to catch that negative momentum, your breakdown candle is the first red candle, and after that which red candle is coming out, it is your confirmation candle, okay. So the high point of the breakdown candle will be your stop loss, okay. So this is the logic of where we define the stop loss in the range bound kind of market, all right. And where you find the stop loss, or where do we define the stop loss level in the trending market. Now you know the basic logic of it, okay. So before going forward and trying to understand how do we execute the stop loss orders, before that we have to know the logic, where do we put the stop loss in a trade, correct. That was the logic behind putting this particular slide over here. Now let's go forward. जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग ने लॉजिक देखा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब कैसे डिफाइन करना है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस आना चाहिए कोई भी ट्रेड में, बट इसको एग्जीक्यूट करना कैसे है, ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे. सो वी आर गोइंग टू सी द एग्जीक्यूशन पार्ट इन द इन्वेस्ट राइट ऐप एंड इन HDFC स्काई ऐप ऑल्सो, ठीक है. तो इसमें हमने इन्वेस्ट राइट में दो टाइप के ऑर्डर्स में आपको दिखाऊंगी, एक तो स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट. सिमिलर वे HDFC स्काई में भी मैं आपको दो टाइप के ऑर्डर्स दिखाऊंगी, स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, उसके लिए यू विल हैव टू हैव अ पोजीशन फर्स्ट, राइट. पोजीशन जब आपके पास एक्टिव होगा उसी में जाके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, करेक्ट. सो दैट पर्टिकुलर थिंग आई एम गोइंग टू शो यू. सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर पर्टिकुलर पोजीशन and you have to click on square of a cell, and then you have to select stop loss as an order, okay. And जो मैं आपको बता रही थी कि एक ट्रिगर प्राइस होगा और एक एक्चुअल स्टॉप लॉस प्राइस होगा, तो यहाँ पे जो एंट्री हुई है वो अराउंड 10 हुई है, ठीक है, 10 रुपए के अराउंड का एंट्री है. और यहाँ पे मैंने ट्रिगर प्राइस क्या लगाया है, 6 लगाया है, और एक्चुअल प्राइस मैंने 5 लगाया है. तो जैसे ही ये ऑप्शन का प्राइस नीचे आएगा और 6 टच होगा, ठीक है, मेरा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाएगा, और 6 के नीचे 5 तक ये जो मेरा प्राइस बैंड है 6 to 5, इसके बीच में मेरा ऑर्डर, मेरा जो ये पर्टिकुलर पोजीशन है वो कहीं पे भी एग्जिट हो सकता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल ऑर्डर्स, ओके. सो you have to select the stop loss order over here, enter trigger price and SL price and click on sell, okay. ये आपको रिव्यू एंड कंफर्म का स्क्रीन आएगा, कंफर्म सेल ऑर्डर एंड योर ऑर्डर इज प्लेस्ड सक्सेसफुली. तो इसके बाद जब भी आपका प्राइस जो है स्टॉप लॉस पर जाएगा, तो अगर ये आपका 6 हिट होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है. अगर मान लो कि आपका प्राइस नीचे नहीं आया, यू आर गोइंग इनटू प्रॉफिट, अब आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ये एक्टिव है स्टॉप लॉस का, उसमें जाके आप मॉडिफाई करके आप एग्जिट कर सकते हो एट मार्केट प्राइस, और इवन एट लिमिट प्राइस, या फिर आप जो भी स्टॉप लॉस का ऑर्डर है उसको ही ट्रेल कर सकते हो मैन्युअली, ओके. दैट यू कैन डू. सो इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो बिकॉज ये स्क्रीनशॉट्स हैं, बट अगर आपको लाइव कैसे उसको प्रोसेस करते हैं वो भी देखना हो, so for that I've taken the screen recording as well. So I hope all of you can see my screen. This is the example of the same position that जो आपने स्क्रीनशॉट देखे हैं. यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर सिलेक्ट किया,
ट्रिगर प्राइस डाला और सेल पर क्लिक कर दिया। सो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर अपना सक्सेसफुली प्लेस हो गया। ऑलराइट, सो जब भी प्राइस अगर नीचे जाता है सो इट विल बी अ स्टॉप लॉस हिट। ओके, give me a second please. सो जो हमने एग्जांपल देखा दैट वाज द स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ओवर हियर। सो अभी मेरे पास स्टॉप लॉस मार्केट हम लोग ऑप्शन में नहीं यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट इन द कैश, वी कैन यूज इट इन द फ्यूचर्स। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ कैश ओवर हियर। आई हैव सिलेक्टेड one of my holding, select a position, click on sell, और यहाँ पे जैसे हमने पहले SL का ऑर्डर सिलेक्ट किया था, वी कैन सिलेक्ट ओवर हियर SLM। ओके, स्टॉप लॉस मार्केट। अब डिफरेंस यहाँ पे इतना ही है कि जो हमने पहले दो प्राइस एंटर किए थे, एक तो ट्रिगर प्राइस था और दूसरा एक्चुअल प्राइस था, एक बैंड निकल के आ रहा था। यहाँ पे वी आर ओनली गिविंग द ट्रिगर प्राइस। ऑलराइट, सो जैसे ये ट्रिगर प्राइस को टच करेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक, उसके बाद क्या होगा कि उसके नीचे का जो भी अवेलेबल बिड होगा वहां पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस ट्रिगर प्राइस वी हैव टू गिव। Select order type SLM, enter trigger price, click on sell, and we have to confirm this particular order. So this is the example of placing a stop loss order, stop loss market order in Invest Right app. So Invest Right में हम लोग ने दोनों order देखे, stop loss limit and stop loss market. Okay, now we will go forward and look at the HDFC Sky stop loss limit order. So as usual, I have to select my open position first, then click on square off. अब ये मेरा एंट्री 15.5 16 के अराउंड कुछ है। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे सेम वे SL का ऑर्डर प्राइस आई हैव टू सिलेक्ट and I have to put in the trigger price and the actual stop loss price. Okay, so my entry was at around 15.5. I'm putting the trigger price as 13 and the actual stop loss price as 12.5. So whenever the price is going to come down and it will touch 13, my order will be activated and it will get executed between 12.5 to 13. All right, and after that I have to review the sell order and I have to confirm and place the order itself. Simple. इसका एक्चुअली एक टोटल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सो इसमें राइट फ्रॉम initiating a position, then putting a stop loss order, and then going to modify the order and exiting the पर्टिकुलर पोजीशन विदाउट अ स्टॉप लॉस। सो अगर मुझे स्टॉप लॉस में एग्जिट नहीं करना है, स्टॉप लॉस के ऊपर ही है मेरा प्राइस और मुझे एग्जिट करना है लेट्स से प्रॉफिट में या फिर कॉस्ट पे, तो फिर कैसे करना है वो पूरा एक वीडियो है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। So here I'm going to take a position into 46,600 put of Bank Nifty. So my order is executed and a position is active over here. Now I'm putting a stop loss. I've selected the stop loss order. I'm putting in the trigger price and the stop loss price, and I'm going to place that particular order. Now I do not want to wait till the stop loss. I want to modify the order and exit the trade.
So what I can do, I have selected the limit price. Now I'm going to put in my own, जो भी मुझे प्राइस लगता है कि वहां पे लिमिट पे वो एग्जैक्ट प्राइस पे एग्जिट करनी है, वो प्राइस आई कैन पुट इन. I can also swipe out at market price as well. So this is how I can exit the trade if I'm not hitting the stop loss. Okay. So this was the example of HDFC Sky stop loss limit order. ठीक है, अब stop loss market order भी है. ओके, सो उसका हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे. इसमें मैंने आईटीसी का एग्जांपल लिया है. आईटीसी का पोजीशन मेरे पास है और आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दैट एंड I'm going to click on the square off, and then I'm going to select the stop loss market order. Okay. And I will enter the trigger price and simply review sell order and place the order. Simple. ठीक है. अब हम लोग ने जब पोजीशन में हम लोग होते हैं उसके बाद स्टॉप लॉस कैसे डालना है वो देखा. बट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर सो वर्सेटाइल दैट वी कैन ऑल्सो क्रिएट द पोजीशंस यूजिंग द स्टॉप लॉस ऑर्डर्स. मतलब जब हमको पोजीशन क्रिएट करनी है, जब हमें कोई ट्रेड में एंट्री करनी है, तब भी हम स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम मार्केट ऑर्डर पे एंट्री करते हैं, जस्ट लाइक वी enter at market orders or limit orders, we can use the stop loss orders for entering into a position itself. Okay, so we will go forward. Similarly, we are going to look at the invest right screens and HDFC Sky screens as well. So all of you will get the answers. So this is creating a position using stop loss limit and stop loss market order using invest right. So here I am selecting a particular contract. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स कब यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रेकआउट आने वाला है. ओके, फॉर एग्जाम्पल this particular trade is trading near to 320. All right, but this has some let's say resistance at 325. Okay, so I do not want to enter below 325 or let's say 330. Okay, but I do not have time to keep looking at that price. All right, or when that particular price is going to break out above that resistance, the move is going to be very fast. Correct, so I may not able to enter manually into that trade. Okay, that is where we can use these particular orders. So what we can do, I can click on buy. This is your buy and sell. Okay, I am just giving an example of the buy over here, but then it works for the sell as well. So let's say if I want to buy this particular trade at a little higher price. All right, so what I've done, I've put the trigger price as 330 and the actual price as 345. So जैसे इसका breakout आता है तो 340 पर मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और between 340 to 345 this particular trade is going to be executed. ठीक है, so even if I'm not able to enter manually into it, this particular trade will be executed by the system. ठीक है, so this is how we can enter into a position using the stop loss orders itself. So this is how we can confirm and place the orders. Now, as I told you, yeah, so this is about the stop loss limit order. अब stop loss market order में सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा कि ये price field we will not have to enter. Okay, there will be only one price field, trigger price, और जैसे ही 340 को क्रॉस करता है 340 के ऊपर नेक्स्ट अवेलेबल प्राइस पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा. Okay, so this is the only difference between stop loss limit and stop loss market orders when we enter into a position. Right, let's go forward and look at the creating a position using stop loss order into Sky.
So I want to enter into this particular trade 46,800 put, okay, but I do not want to enter at around 220. I want to enter after a breakout, so I will enter a higher price over here and select stop loss order, and I will review the order and the order can be placed. ओके जैसे हमें जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो एलटीपी है वो एलटीपी के नीचे जब हमें एंट्री करनी होती है हम लिमिट प्राइस डालते हैं करेक्ट। तो जब भी अब मान लो कि 220 पर ये पर्टिकुलर ट्रेड चल रहा है मुझे 220 पे नहीं 200 पे एंट्री करनी है आई वांट टू एंटर एट 200 सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई विल use the limit order right I will put 200 but what if I want to enter at a higher rate that is where the stop loss limit order or stop loss market orders will help me okay so we saw the stop loss limit order into HDFC Sky now we will see the creating a position using stop loss market order in HDFC Sky all right so this is a future position of Nifty March future I'm going to click on buy and so basically I have to select a script or contract click on buy and I have to enter the trigger price over here. So right now it is trading near to 22,095, but I want to enter about 22,110. Okay, so this is my trigger price. Is once this particular trade goes about 22,110, my order will be activated and it will be executed. Okay, so we have to select the order type as stop loss market and enter the trigger price and we can place the order okay so I hope that now you are very clear about various stop loss orders that we are able to place और जो भी stop loss orders है हो सकता है कि पहले आपको उसका correct usage नहीं पता हो तो I hope that so many of your doubts are cleared in this particular webinar because earlier we used to get a lot of questions on the stop loss orders how do we place it in HDFC InvestRight or Sky app or basically how do we put the logic behind the trigger price or the stop loss price so all of that I have tried to you know answer to you all but still if you have any questions left about this particular topic you can put it into the chat box or the question box and I will try to answer them all right and also if you have any suggestions for the future topics um, for the webinars you can let me know and if we find that this particular topic has a lot of demand we can take up that particular topic for the next future webinars so that also you can suggest us um, all the recordings of these particular webinars we have already completed a lot of webinars on various topics regarding the technical analysis regarding F&O. So all those recordings are available on the YouTube channel of HDFC Securities. You can visit the channel and there is a particular playlist available for these webinars. So you can find all the webinars at one place. So if you have missed any particular topic, you can go and visit this. This particular webinar recording will also be uploaded over there.
So there is a question, what happens with trailing stop loss when the price starts moving downwards after an elevation? So the trailing stop loss will get hit whenever the price is coming down and touching that particular trailing stop loss level. Okay, right now we are the trailing stop loss is in pipeline, and we will shortly launch the trailing stop loss as well in both the apps. So right now we have to work upon the stop loss limit and stop loss market, and the trailing stop loss is going to come shortly. Okay, right now we have only kept this for the app versions about the Invest Right and HDFC Sky, but if there is a lot of demand, we will also show the web version screens as well. But अभी आपको लॉजिक ऐप में पता है कि ऐप में इन्वेस्ट राइट के या फिर स्काई पे how do we put the stop loss, so it will be easier for you to understand how do we use on the web versions as well. So it is pretty much easy if you just little bit explore. Okay, so someone is asking about the Nifty chart in Invest, right? So right now it is not available, but in just few days, it will be available in the Invest Right app. You can just update your app in a few days of time. The feature is going to roll out, so you will be able to see the spot charts of Nifty, Bank Nifty as well. Invest Right and Sky, both apps are of HDFC Securities only. It's just that they are two different apps, all right? So HDFC Sky is comparatively new, and the earlier we had Invest Right. Both are active, both are good. We have not really included the cover orders and basket orders over here, bracket orders over here. We will come up with another session for that.
So we have covered a lot of topics about open interest, how to read the option chain, about the price action, how to read the charts, various candlestick patterns, chart patterns. So we have covered about even indicators. So you can go and visit the HDFC Securities YouTube channel, and you can find out the playlist for the webinars, and it will help you to learn all these topics if you are new to the market. HDFC Invest Right credentials will not work for HDFC Sky app. So if you want to switch to HDFC Sky, just talk to the HDFC Securities RM, and they will help you to migrate to HDFC Sky. They are two different accounts. So if you wish to migrate, you can get in touch with the RM. So these are day orders. So once once the day is ended, your order will expire. Okay, and that is why we have the hedges for F&O, correct? So if you are going to carry over the position, you will have to carry it. If it is very risky, you will have to carry it in the form of a hedge. All right, because your day order will be expired on the previous day. So I think these are all the questions that I'm seeing on the screen. Also, we are, going towards 5 o'clock. So I'll just wind up over here. If you have any suggestions of the topics, you can, send us on our social media handles. All right. So generally, we have webinars on every Thursday. All right. But for the details of the topics and all the other details, you can follow our Telegram channel, or just stay tuned for your emails. So we will send the emails, we will send the push notifications through the apps, and we'll also put in the Telegram channel about um, the various coming webinars. So just stay tuned, and I would like to see you all in the future webinars as well. Thank you so much all.